अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ वफ़ा हसन और आज हम डिस्कस कर रहे हैं एक ऐसी किताब जो पाकिस्तान के बनने की कहानी को सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक तरीके से बताती है। ये किताब पार्टीशन के वक्त होने वाली ब्रुटैलिटी, पॉलिटिकल डिसीजंस और इंसानों की स्ट्रगल्स का सच सामने लाती है। अगर आप स्टूडेंट हैं, कंपैरेटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं या हिस्ट्री लवर हैं, ये वीडियो आपके लिए है। Chapter 1 is all about the last days of the British Raj after World War II was financially weak. ब्रिटेन को पता चल गया था कि अब वो इंडिया को ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते क्योंकि वार के एक्सपेंसिव बहुत हैवी हैं और कम्युनल डिफरेंसेस इंटेंसिफाइड हुए। कांग्रेस ने क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च किया, मुस्लिम्स ने अपोज किया क्योंकि वो समझते थे कि हिंदू मेजॉरिटी डोमिनेशन होंगे। कैबिनेट मिशन फेल हो गया। वाई? बिकॉज कांग्रेस वांटेड अ स्ट्रॉन्ग सेंटर वेयर एज मुस्लिम लीग वांटेड ऑटोनॉमी फॉर प्रोविंसेस। अहमद सईद लिखते हैं, द ब्रिटिश रियलाइज दैट द मोर दे ट्राई टू कीप इंडिया यूनाइटेड द मोर इट वुड ब्रेक अपार्ट। जब ट्रस्ट टूट जाता है कोई कॉम्प्रोमाइज़ काम नहीं करता। दिस विल बी द बिगेस्ट लेसन। चैप्टर नंबर 2, डिमांड फॉर पाकिस्तान एंड स्ट्रगल। In 1940, Lahore resolution took place. पाकिस्तान का डिमांड फॉर्मली आया। मुस्लिम लीग ने पॉलिटिकल स्ट्रेटजी बनाई अंडर Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah के स्पीचेस इंपॉर्टेंट थे। वो कहते हैं, वी आर अ नेशन विद आवर ओन कल्चर, language and identity. We cannot merge into a Hindu majority. Like we have our own culture, हमारी ज़ुबान, identity, culture सब कुछ इंडियन हिंदू मेजॉरिटी से डिफरेंट है. So why we should need to stay in the same Hindu majority? We demand our own nation, Pakistan. कांग्रेस और हिंदू लीडर्स opposed this idea strongly, but Muslim united. अहमद सईद emphasize करते हैं, पाकिस्तान demand was not sudden, it was the result of years of mistrust. Chapter 3 is all about partition plan and boundary commission. Mountbatten plan was launched in June 3, 1947. It was all about partition with two dominions, India and Pakistan. Redcliffe line, which is all about Sir Cyril Redcliffe, उन्होंने border draw किया in just 5 weeks. Punjab and Bengal split on religious majority basis, but बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी हुई at that time. गुरदासपुर इंडिया को दिया गया जिसकी वजह से कश्मीर इशू स्टार्ट हुआ। की इशू प्लानिंग बहुत वीक थी, आर्मी डिवीजन, रेल ट्रांसपोर्ट, करेंसी सिस्टम सब इनकम्प्लीट था। Chapter 4 is all about migration and massacre. 14 million people have migrated, Muslims to Pakistan and Hindus and Sikhs towards India. Loot, arson and trains full of dead bodies became a common sight. Ahmed Saeed लिखते हैं, never before in history had so many been uprooted in so short time. Women were victims of violence on both sides. Rape, abduction and forced conversions were common at that time. Despite horrors, people continue because Pakistan का dream उनके लिए ज़्यादा बड़ा था. Chapter 5 is all about rehabilitation and aftermath. Refugees arrived in Lahore, Karachi and other countries with nothing. They have not anything with them. Pakistan inherited only just 17.5% of India's financial assets and very few industries. So we have at the start very few industrial bases. Despite these hardships, people built new lives. They were capable of living homes in camps, and with time Pakistan stood on its feet. Ahmed Saeed note करते हैं, the spirit of sacrifice and unity kept Pakistan alive. Chapter 6, the lessons and reflections through all this. First lesson is, freedom always demands sacrifice. If you don't want to sacrifice anything, then you cannot get freedom. Second, unity is the backbone of survival. If you are not united, then it's not possible for them to survive because it's the backbone. Unity is the backbone of survival. Never forget the cost of independence is warning for today's generation to value peace and stability. Peace and stability is important rather than do any kind of war. And independence is truly necessary. If you are not truly independent, it will definitely lead towards lack of peace and
instability, cost of independence you need to never forget. फ्रेंड्स, ये थी अहमद सईद की किताब ट्रैक टू पाकिस्तान की डिटेल समरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि नेक्स्ट कौन सी बुक कवर करें। अगर आपको मज़ीद डिटेल्स चाहिए इस बुक के बारे में, अगर अभी ये बुक थोड़ी शॉर्ट मैंने इसको कवर किया तो नेक्स्ट वीडियो में लॉन्ग डिटेल में कवर कर सकती हूँ अगर आपको चाहिए तो। थैंक यू सो मच।